अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ Mr.Ahsan in front of you from the platform of the speaker। चंद लम्हे पहले मैंने आपके सामने जो शेर अर्ज़ किया अल्लामा इकबाल का शेर है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि किसी भी मुल्क की तबाही और तरक्की उस मुल्क में बसने वाले हर फर्द के हाथ में है? क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि किसी भी मुल्क में बसने वाले हर फर्द से ये सवाल किया जाएगा और वो इस बात का जवाबदेह होगा कि उसने अपना किरदार इस मुल्क की तबाही में अदा किया या तरक्की में? क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि किसी भी मुल्क में बसने वाला हर फर्द उस मुल्क के मुक़द्दर का सितारा होता है? और अगर वाकई ये तमाम बातें सच हैं तो हम पे वाजिब है, लाजिम है कि हम उन इदारों की बात करें जिन इदारों में इन अफराद के जहन में बसने वाली सोच को एक सिम दी जाती है। हम पे वाजिब है कि हम उन इदारों की बात करें जिन इदारों में इन अफराद के दिन का ज़्यादातर हिस्सा गुजरता है। हम पे वाजिब है, हम पे लाजिम है कि हम उन इदारों की बात करें जिन इदारों में इन अफराद को ये सिखाया जाता है कि उन्होंने इस इदारे से निकल के अब कौन से महाज पे कैसी जंग लड़नी है, कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। हम पे लाजिम और वाजिब है कि हम उन इदारों की बात करें जिन इदारों में इन अफराद को ये बताया, सिखाया और समझाया जाता है कि उन्होंने ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात का कैसे सामना करना है। आप खुद से सवाल कीजिए और मैं भी खुद से सवाल करती हूँ कि वो इदारे कौन से इदारे हैं? जवाब एक ही होगा, वो इदारे तालीमी इदारे हैं। जी बिल्कुल। टुडे we are going to have a very fruitful and progressive discussion over this topic. The topic is 10 questions on the education and educational institutes, the condition of education and the condition of educational institutes in Pakistan. And specifically we will be talking about the condition of education and condition of educational institutes in Sindh. To have a very fruitful and progressive discussion over this topic, we are having a very special guest. He is a student, he is a teacher, basically he is from the field of science. He has done his masters in physics from the University of Karachi, and right now he is doing his MPhil from the same campus. Along with this, he is also working as a physics teacher. So I think without wasting any kind of time, we should move towards him to have a meaningful and progressive answers of those questions which I am going to ask to him for you people on education. So let us welcome warmly Mr. Ahsan Danish. Assalamu alaikum Ahsan. Assalamu alaikum Ahsan. Can you hear me? ऐसा ना आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। जी वालेकुम सलाम जी ऐसा थैंक यू। ऐसा मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट यू, टेल अस समथिंग अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड, फ्रॉम विच फील्ड यू आर, फ्रॉम विच एजुकेशन बैकग्राउंड यू आर। सो हियर वी गो, थैंक यू। वालेकुम सलाम। Okay, thank you so much, Bushra, for inviting me to this wonderful meeting. First of all, my greetings to all the listeners as well as viewers. I hope all the listeners will be happy, enjoying their lives a lot, and will be benefiting from this great program. I, Ahsan Danish, belong to Baltistan, the area which is rich in the most beautiful peaks and lush green areas of Pakistan. My early education was in my hometown, Kharman Turban, under the supervision of very kind teachers. I got my matriculation from Government Boys High School at Sikardu, intermediate from Boys Degree College Sikardu, bachelor's from Government Boys Degree College Sikardu, and I have done my master's in physics from the worldwide recognized University of Pakistan.
I mean from University of Karachi, under the supervision of great professors. Thank you. Thank you so much, Ahsan. Okay, so that was a quite good introduction of Ahsan. Ahsan के बारे में हमने जाना कि Ahsan की शुरू की तालीम और तमाम तर जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो कहाँ का है. So basically he's from Gilgit, if I'm not wrong. Okay, so let us move towards the next question we are having. Ahsan, I want you to answer what is education according to you. If we talk about education, we have different definitions of education. लोगों के जहन में मुख्तलिफ definitions होती हैं तालीम को लेके. आप क्या समझते हैं कि तालीम, लफ्ज़ तालीम आपके मुताबिक क्या है? What is education to you? Thank you. Yeah, well, it is quite difficult and challenging question to be answered to me, but I'll try of my best. Maybe I'll be wrong, but I give my personal opinion regarding education. As my point of view is concerned, education is an assembly of tools or methods by using that we can easily get knowledge. Also, education is an assembly of skills. By using that skills, a person achieves the knowledge easily what he wants. Education may be changed with the passage of time. For example, in order to know about the natural facts and laws, we study tools and methods in educational institutions. These methods may be changed and be easier as we human efforts to make them more easy. Okay, thank you so much, Ahsan. I request you when you are not speaking, kindly mute your mic. Okay, so third question is basically the start of this program or this discussion. I want you to answer if we talk about the educational buildings. अगर हम उन जगहों की बात करें जहाँ पे हमारे बच्चों को तालीम दी जाती है, what do you think, how much educational institute or the place or hygiene these things matters? किसी भी तालीमी इदारे की जो इमारत है वो कितना अहमियत रखती है एक बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट में, स्टडीज़ डेवलपमेंट में, फिजिकल हेल्थ में, उसके इमोशंस में, उसके बिहेवियर में. थैंक यू सो मच. Well, the building structures of institutions like outlook of school, classroom size, laboratories, and equipment, education infrastructure are the crucial elements of learning environment in schools and universities. There is strong evidence that high quality infrastructure facilitate better instructions, improves student outcomes, and reduce the dropout rates, among other benefits. Smaller size classes, creative classrooms, interactive toys, availability of natural lighting, and proper ventilation ensure good comfort for teachers to impart the knowledge and assess each student separately. It is easy to imagine how disheartening it would be for students, teachers, and parents. If, for example, the school structure may not be withstand the next earthquake, or if its electrical wiring is exposed, its window glasses are broken, or its bathrooms are source of the contamination instead of being sanitary. If school buildings are prone to be flooded by intensive rain, swept away by high winds, exposed to the hazardous materials, or decaying for lack of maintenance, it hinders both teaching and learning, making it harder to produce the level of academic results that are possible in the safe and healthy building. Okay, Ahsan, thank you. Got your point. It was very helpful. Yes, we should be concerned, and we should take care of the hygiene of the atmosphere and the places where we are giving education to our, you can say, future or youth or new generation. Okay, so my next question to you is that as you told before that you are from Gilgit basically. Ahsan, I request you to mute your mic. I request you to mute your mic.
Kindly mute your mic, Ahsan. Education and educational institute in GB. If I talk regarding an education and educational institute in GB, so first of all, I would like to talk about education trend in Gilgit-Baltistan. The trend of education in Gilgit-Baltistan has been growing very fastly for last several years, due to which a large number of students taking admissions in schools and colleges. But in contrast to this, the educational institutes are highly poor facilitated. For example, lack of teachers, capacity in schools, limited and non-furnished classrooms, lack of laboratory equipment, lack of sanitary system, so and so. The current number of schools and colleges are not enough to provide the quality of education for the students. There are two government universities in Baltistan. One is Baltistan University, and second one is Karakoram International University. Baltistan University is situated in Sikardu city. It has 3 campuses, and it offers 17 courses, and it has 114 professional teachers, and there are almost 2,500 students who are studying currently. If I talk about Karakoram International University, the Karakoram International University situated in Gilgit city. It has 4 campuses and has 23 departments. It offers 3 programs in like MS, and few departments offer PhD programs also. There are 100 faculty members in Karakoram International University, and currently 3,800 students are studying. The campuses of Karakoram International University are KIU Hunza Subcampus, KIU Diamar Chilas Subcampus, and KIU Ghizar Subcampus. So, if I overall educational institute in Gilgit-Baltistan, if I talk about that, there are 18 colleges in GB, including 8 girls' college and 2 boys' college. 10 of them are in Gilgit district, and 7 are in Sikardu district. 7 are degree colleges, and 8 are intermediate colleges, and the other 2 are elementary colleges. Okay, thank you, Ahsan. Okay, so नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो दूसरा सवाल है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ वी टॉक अबाउट द करिकुलम, अगर हम करिकुलम की बात करें तो वी आर हैविंग अ कॉन्सेप्ट, हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनमें एक ख़ास किस्म का एहसास कमतरी पाया जाता है. So what do you think? Should we have the same curriculum throughout the country, throughout the province? हमारा जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, जो बुक्स हैं, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारों में सेम होनी चाहिए, उसका स्टैंडर्ड, उसका लेवल सेम होना चाहिए. क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो हमारे जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, सिर्फ इस वजह से कि उनके पेरेंट्स इतनी फ़ीस पे नहीं कर सकते, वो लोग एहसास कमतरी का शिकार होते जा रहे हैं. What do you want to say about it? Should we have a same curriculum throughout the province or throughout the country? Thank you. Yeah, there must be a curriculum in private and government sectors. The same national curriculum should be there for all, but it does have many challenges that needs to be resolved. For it to be possible, first, all schools, public or private, should have competent teachers who can provide the students much needed knowledge. Okay, thank you, Ahsan. So आपके पॉइंट से मैं ये कह सकती हूँ कि yes, you also agree with this point that we should have same curriculum and same course outlined throughout the country or throughout the province. My next question is that if we talk about behavior of teacher, अगर हम उस्ताद के behavior की बात करें, so do you think should we concentrate on this? हमारा जो टीचर्स का behavior है, हम आए दिन ऐसी खबरें सुनते हैं कि
हमारे जो है वो बच्चों पे तशद्दुद हो रहा है या उनसे एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है या इस तरीके के वाक़यात हम सुनते हैं. डू यू थिंक कि हमारे टीचर्स के रवैये पे हमें फोकस करना चाहिए? वी शुड ट्रेन आवर टीचर्स दैट हाउ टू बिहेव विद योर स्टूडेंट. हम उनको स्टूडेंट्स के साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए? एब्यूजिव लैंग्वेज और फिजिकल होना इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. डू यू थिंक लाइक दिस? थैंक यू. Okay. The progress and mind development of the students highly depend upon the behavior of teacher, what kind of teacher is teaching to them. Teachers, beyond their own stress, inability to cope with the successful situation in the classroom, or interactive behavior, may affect their capacity to manage the student misbehavior. Teachers' behavior can also have negative influences on the students, like socio-emotional development. ओके, थैंक यू सो मच. यस, यू आर राइट. टीचर्स का जो बिहेवियर है वो सोशली और इमोशनली स्टूडेंट के जहन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. एंड वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द बिहेवियर ऑफ टीचर्स एज वेल विद ड्यू रेस्पेक्ट. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ यू टॉक अबाउट the counseling of parents, here I'm not talking about the parents teacher meeting. ध्यान रहे यहाँ मैं parents teacher meeting की बात नहीं कर रही हूँ. मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर हमारे स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, क्या हमें चाहिए कि हम उनके पेरेंट्स को वीकेंड पे बुला के या ऑफ टाइमिंग में बुला के पेरेंट्स काउंसलिंग के सेशंस दें और उनसे बातचीत करें, ताकि जो घर पे स्ट्रेस है रिजल्ट्स को, पढ़ाई को लेके या बिहेवियर को लेके, वो तमाम मसाइल हमें ना देखने पड़ें. डू यू थिंक दैट देयर शुड बी व्हाट टू से काउंसलिंग और द पेरेंट्स के बिहेवियर, उनकी काउंसलिंग पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए? डू यू थिंक लाइक दिस? थैंक यू. Okay. Exactly, the parent counseling session should be held once a week or at least once a month in our schools. In these sessions, educationists or motivational speakers should be invited to give the effective motivational guidance on parenting. Since the progress and mind development of the students not only depends on the schools, but these have direct dependence on how much parents or family contributing in his or her career counseling. Like if parents know and understand the God-gifted talents of their child, they can also guide their child to make decisions of their own in choosing their subjects and fields. In our country, it often happens that students reach the college level and they do not even know what they are going to be in their future and which subject or field is better for them. So they cannot contribute, they can contribute in they can contribute and become a successful one in their future. And that is why students do not perform well at college and university level. The only situation to this problem, the only solution to this problem is that in our schools, there should be parenting session at least once a month on weekends. Okay, thank you so much. You said that we should have a parents teacher, what is the parents counseling session once in a month, but what I believe in that we should have this every week. Okay, so next question is that if you talk about students, हमें एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल दूंगी. बेसिकली आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट एंड यू आर ऑल्सो स्टूडेंट. सो हमने ऐसा देखा है, पर्सनली मैंने ऐसा देखा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंटेशन, क्लास में जब भी कोई टेस्ट अनाउंस होता है, प्रेजेंटेशन अनाउंस होती है, तो स्टूडेंट्स का वोट हमेशा रिटन टेस्ट की तरफ जाता है. प्रेजेंटेशन के नाम से स्टूडेंट्स घबराते हैं, भागते हैं, खौफ खाते हैं. उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है. तो क्या आपको लगता है कि हम प्रेजेंटेशंस में लैग कर रहे हैं? हम प्रेजेंटेशंस को उतना ज़्यादा नहीं सपोर्ट करते. प्राइवेट सेक्टर्स में तो फिर भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स में प्रेजेंटेशंस का, डिबेट्स का, डिस्कशंस का कोई रुझान नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर्स में भी इतना कोई ख़ास नहीं है. सो डू यू थिंक दैट वी शुड हैव अ प्रेजेंटेशंस एंड डिबेट्स एंड डिस्कशंस इन द क्लास मोर देन द रिटन वर्क? डू यू थिंक लाइक दिस, that we are promoting the what to say writers, not presenters? Thank you. Okay. Yes, it is quite an important question to be answered.
No doubt, we are promoting only writing material, copying of notes given by teachers, and to memorize that notes for the sake of passing papers and exams. This way of providing and getting education is poisonous for self-study and creativity of the students, because in this way, students do not work hard by themselves and they just try to memorize the stuff provided by the teachers. At least, at least at least on university level, it must be given and must be forbidden. We are not promoting to make our students as presenters, and we all, including universities, teachers, and students, know that after passing master's levels and are to after passing master's levels, we are to go in our professional and practical lives, where we will have perform practically. Beside of all this happening, universities are not working on the change his way of education. And we and when a student get a chance to give presentation, he feels shy as well as he feels fearless and try to get rid of the giving presentation. So this way of education must be forbidden, must be changed, and the presentation giving presentation system for the student must be include and must be taken out in classes. ओके थैंक यू सो द सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि ये तो हमने सारी बात कर ली कि डिफरेंट हवाले से कि तालीमी इमारतें हमने देख ली हैं और इदारे भी देख लिए और प्रेजेंटेशंस भी देख ली और बैकग्राउंड भी देख लिया क्वेश्चन अब आपसे ये है कि अब वो तीन चीज़ें कोई आपने बतानी है जो आपकी नज़र में लगता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो नहीं है और अगर होंगी तो हमारे खास करके सिंध का जो तालीमी निज़ाम है वो बहुत बेहतर हो जाएगा एंड ओनली थ्री थिंग्स यू हैव टू टेल अस और टू द गवर्नमेंट और टू द पीपल और टू द अथॉरिटियंस के वो तीन चीज़ें करें तो हमारे जो हालात है तालीम का वो तमाम बेहतर हो जाएगा खास करके सिंध की अगर मैं बात करूँ थैंक यू Yes, I want to say something about the institutions in Sindh. So what I seen, what I observed, and what I learned from the Sindh institutions, on the basis of these things, I prefer to say something. The government of Sindh should be prioritized first to provide enough funding for the education institutions to fulfill the basic and fundamental requirements, which are crucial elements of quality education. Secondly, management of institutions pay their must pay their full attention for the progress of institutions day by day. Thirdly, the curriculum must be updated and it must create and reflect the culture and identity. ओके थैंक यू एहसन ये तीन चीज़ें आपकी नोट डाउन कर ली गई हैं अच्छा जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का आपसे ये है कि आप क्या समझते हैं कि आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अथॉरिटियन से या आवाम से लोगों से कि लास्ट का आपका मैसेज क्या होगा डू यू थिंक वी शुड हैव दिस टाइप ऑफ सेशंस और डू यू थिंक दैट वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल दीज पॉइंट्स अब तक जो भी सवाल हमने डिस्कस किए पॉइंट्स को उठाया अब इन पर बात नहीं इन पर इकदाम होना चाहिए डू यू थिंक लाइक दिस थैंक यू Okay. Finally, I want to say that there are few main departments which play a vital role for development and survival of a country. One of them is education department. In this regard, I request to both federal and provincial governments of Pakistan to give first a priority in providing enough funds to include single and same curriculum of international standards. And finally, again, thank you, Bushra, for inviting me on this
Okay, I'm so sorry, the session was interrupted. So thank you so much. Clear. Yes, it's done. Okay, thank you so much. Clear हो गया? जी 2 मिनट सबर. Okay, so thank you so much, Ahsan, for joining us. आपका बहुत कीमती वक्त हमने. आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही. Okay. थैंक यू सो मच हसन, आपने बहुत कीमती वक्त अपना हमें दिया और हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए. इख्तिताम में इस बस उसी शेयर पे करना चाहूँगी जो मैंने शुरुआत में पढ़ा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, और बिल्कुल ऐसा ही है कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. तो इस शेर का सवाल मैंने आपसे शुरू में पूछा था, और ये पूछा था. थैंक यू सो मच एहसन, आपने अपना वक्त हमें दिया और बहुत शुक्रिया आपका. और हमें तमाम सवालों के जवाब हमारे मिल गए हैं. उम्मीद है कि ऑडियंस को भी ये सेशन अच्छा लगा होगा. इख्तिताम में बस उसे शेयर भी करना चाहूँगी जिस शेयर से मैंने शुरू किया था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, बेशक हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. तो शुरू में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि वाकई ऐसा है, तो अब यकीनन आपको उसका जवाब मिल गया होगा कि वाकई ऐसा है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस. स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. Thank you. Allah Hafiz. Thank you.